Bismillahirrahmanirrahim. Today we are reading Google News. First of all, download Google News from Play Store. Personal vendetta led to brutal killing of Sri Lankan national in Sialkot. Personal vendetta मतलब ذاتی رنجش की जो है वो उसने जो है बहुत ही दरिंदगी वाले कत्ल की तरफ गई सियालकोट में श्रीलंकन नेशनल श्रीलंका के रहने वाले को Priyanka Deyawadana was a true professional known for his stern production standards, say SCCI president. SCCI president ने बताया कि प्रियंका देवावदना एक बहुत ही प्रोफेशनल आदमी थे. A mob hits an overturned car with a stick after an attack on a factory in Sialkot, Pakistan, December 3, 2021. In the scene, grab taken from a video. यानी इस मॉब कहते हैं हुजूम को. हुजूम ने जो है कार को जो है वो अटैक किया. While strongly condemning the barbaric act of violence at a factory in Sialkot, leading to the brutal killing of Sri Lankan national Priyanka Deyawadana, Sialkot Chamber of Commerce and Industry SCCI President Mia Imran Akbar said that the personal vendetta on part of some laborer in the garb of Ali religious title led to the heinous incident. While strongly condemning, condemn करना कहते हैं मजम्मत को. बारबेरिक एक्ट दरिंदगी वाला जो अमल किया गया है, जो वायलेंस की गई है एट द फैक्ट्री इन सियालकोट की फैक्ट्री में, लीडिंग टू द ब्रूटल किलिंग, जो एक बहुत ही ब्रूटल एंड बारबेरिक मीनिंग्स आर सेम, जिसमें दरिंदगी और सफाक जिसे कहते हैं ना, ब्रूटल सफाक किलिंग हुई है श्रीलंका में. श्रीलंका के जो रहने वाले थे जो पाकिस्तान में काम कर रहे थे. सियालकोट चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री President Mia Imran Akbar said that the personal vendetta on part of some laborer in the garb of alleged religious title led to the heinous incident. उन्होंने कहा है कि जो जाती जो है जो रंजिशें थी या जाती जो मामला चल रहे थे उस वक्त, वो जो है उसने जो एक नया रुख लेते हुए और एक मजहबी टाइटल को यूज करते हुए जो है एक बहुत ही हीनियस मतलब गंदा तरीन जो है ये इंसिडेंट हुआ. Studying the detail of the case, it was found that the Priyanka was a true professional known for his stern production standard, he said in a statement. उन्होंने कहा कि वो एक बताया इस केस के बारे में कि वो एक बहुत ही प्रोफेशनल आदमी थे और उनके जो है उनके बारे में बताया उन्होंने. अकबर stressed that each factions should abide by law and ethics to protect the very social fabric of the country, urging the government to crack down on all perpetrators and incitors and bring them to a befitting justice. इनमें जो वर्ड्स यूज किए गए हैं, परपेट्रेटर यानी जो जुल्म करता है उसको कहते हैं, इंसाइटर भड़काता है, जो बेफिटिंग मतलब जो बिल्कुल एप्रोप्रिएट हो, मुनासिब हो, जो बिल्कुल हक पे हो. तो उन्होंने स्ट्रेस करके ये बात कही है कि अबाइड बाय लॉ को फॉलो, अबाइड यानी किसी चीज को फॉलो करना, लॉ यानी फॉलो जो लॉ को, कानून को फॉलो करना, और एथिक इखलाक को, ये जितनी भी चीजें हैं इनको जो है इसके प्रोटेक्शन करनी चाहिए और इनका क्रैक डाउन करना चाहिए जालिमों का जो इस तरह के काम करते हैं, और इनको जो है सामने लेकर आना चाहिए और उनको जस्टिस होना चाहिए
جو ضروری ہے, جو بالکل مناسب ہے. He said that an urgent meeting of the district leaders of Sialkot was also convened at the SCCI, wherein chairpersons of all trade associations of the city participated and condemned the horrible act. Horrible, ڈراؤنا. انہوں نے جو ہے میٹنگ بلائی ایس سی سی آئی کہ اس میں ٹریڈ تجارتی بھی ایسوسیشن کے لوگ ہیں, پارٹیسپیٹ کریں اور اس کی مذمت کریں. دا بزنس کمیونٹی ریزالو ٹو فارمولیٹ پالیسی ٹو اوائڈ اینی سچ انسیڈنٹ ان فیوچر, ہی ایڈڈ. جو بزنس کمیونٹی ہے وہ اس کو ریزالو کرے ان معاملات کو, اور کوئی فارمولا دے, کوئی پالیسیز بنائے کہ آئندہ یہ چیزیں نہ ہوں, یہ اس طرح کے واقعات وقوع پذیر نہ ہوں. مین وائل اسی دوران اسپوک پرسن فار تحریک لبیک پاکستان while expressing grief and sorrow over the senseless killing of the Sri Lankan national, said that it was unfortunate that the incident was being attributed to his party. اسی دوران میں جو ہے ٹی ایل پی کے انہوں نے ایکسپریس کیا, اظہار کیا کہ بہت ہی دکھ اور افسوس کے ساتھ کہ جو بالکل سینس لیس کلنگ ہوئی ہے, قتل ہوا ہے, بہت ہی بدقسمت جو ہے, بدقسمتی سے یہ ہوا. He said that the TLP stood with the oppressed and was against every oppressor, and the uses of blasphemy allegations for personal purpose was highly condemnable. انہوں نے اس کے ساتھ کہا ہے کہ ٹی ایل پی والوں نے, اچھا اس میں ہے مینی oppressed and oppressor. oppressor کہتے ہیں ظلم کرنے والے کو, oppressed جس پہ ظلم ہوا ہے. ایلیگیشن الزامات, کنڈیمڈ منے مذمت. انہوں نے کہا ہے کہ وہ جن پہ ظلم ہوا ان کے ساتھ کھڑے ہیں, اور جنہوں نے ظلم کیا ان کے خلاف ہیں, اور جنہوں نے بلیسفیمی, یہ ورڈ ہے بلیسفیمی کہتے ہیں جو بہت ہی مذہبی اور نون پرسن ہوتا ہے جیسے پیغمبر ہیں, انہیں کہا ان کے شان کے خلاف, یعنی کہ کوئی ایسی بات جو ان کی شخصیت یا ان کے خلاف ہو اور بہت ہی زیادہ جو ہے قابل مذمت ہو, تو اس کو بلیسفیمی کہا جاتا ہے. اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو بلیسفیمی ہوئی ہے کا نام دیتے ہوئے ان پہ الزام لگایا ہے, وہ جو ہے قابل مذمت ہے. The slogan "Labbaik ya Rasulullah, peace be upon him" belonged to every Muslim, but attributing such incident to TLP was unfair, he added. انہوں نے کہا ہے کہ تحریک لبیک یا رسول اللہ جو ہے صلی اللہ علیہ وسلم بلانگ کرتے ہیں مسلم کے ساتھ, لیکن جو ہے ان کو اس طرح سے لنک کرنا اس انسیڈنٹ سے یہ بہت ہی unfair ہے. The spokesperson said that the Constitution of Pakistan guarantees religious freedom to all. spokesperson نے کہا ہے کہ پاکستان کے آئین میں ہے کہ ہر مذہب کے لوگوں کو آزادی ہے. to all minorities, مطلب جو minorities سے کہتے ہیں جو بہت ہی small group people جو کسی بھی کنٹری میں رہتے ہیں, whether they were Hindus or Christian, چاہے وہ ہندو ہوں یا کرسچن ہوں, ان کو آزادی ہے, مذہبی آزادی ہے. He urged that the authorities to bring those involved in the heinous act to justice, saying that the incident should be transparently investigated, keeping in view all the aspects. انہوں نے یہ بات اتھارٹی کو کہا ہے کہ وہ اتھارٹی ٹو برنگ دوز انوالوڈ ان دس ہینیس, ان کو سامنے لے کر آئیں جو بہت ہی ہینیس, مطلب بہت ہی گندا ترین جو ہے, جو انوالو ہیں اس گندے ترین ایکشن میں, وہ اس کو جو ہے انصاف کو کٹہرے میں لے کر آئیں, انصاف جو ہے ان لوگوں کو, مظلوم کو دلائیں. He is saying that the incident should be
incident, saying that the incident should be transparently investigated. बिल्कुल ट्रांसपेरेंटली मतलब शफाफ तरीके से इसको इन्वेस्टिगेट, उसकी तफ्तीश की जाए, कीपिंग इन व्यू ऑल द एस्पेक्ट्स, तमाम पहलुओं को देखते हुए। लिंच्ड ओवर ब्लेसफेमी, लिंच कहते हैं जैसे संसार करना, किसी को भी ब्लेसफेमी का एलिगेशन लगा के उसको संसार कर देना। द नेशनल वॉज शेल शॉक्ड and disgusted on Friday when a Sri Lankan national was brutally lynched and his body was set on fire by a mob in Sialkot. मुल्क जो है वो बहुत ही एक शौक से गुजरा है कि एक श्रीलंकन के रहने वाले जो यहाँ पे जॉब कर रहे थे, उनको एक बहुत ही दरिंदगी से ब्रूटली तौर पे संसार कर दिया गया, दरिंदगी के साथ उनको संसार कर दिया गया। एंड उनके जिस्म को, उनकी बॉडी को सेट ऑन द फायर, आग में जला दिया गया। अ मॉब इन सियालकोट, बाय अ मॉब, यानी कि जो हुजूम ने ये एक्शन किया। द सिकनिंग इंसिडेंट outraged the nation as the civil and military leaders denounce it as a horrific, shameful and extrajudicial vigilantism. यानी कि ये जो है, इसको जो है ये एक बहुत ही हॉरिफिक, बहुत ही जिसे कहते हैं कि ड्राना और शर्मिंदगी से भरा हुआ जो ये एक्ट हुआ है, इसके बारे में आउटरेज, यानी कि जो आउटरेज बेकाबू हो गया, बेकाबू होने को कहते हैं। द गट wrenching incident took place on Sialkot, Wazirabad road where workers of private factories brutally lynched the Sri Lankan national. ये इंसिडेंट जो है वजीराबाद रोड पे हुआ, सियालकोट में। प्राइवेट फैक्ट्री के मजदूर थे जिन्होंने इन शख्स को जो है संसार कर दिया। Several gruesome video clips shared on social media showed a mob beating the victim while chanting slogan against blasphemy. Other clips showed his body set ablaze as well as the overturned wreckage of what was said to be his car. यानी इसमें क्लिप्स में देखा गया है कि जो हुजूम है इसने किस तरह से विक्टिम जिस पे जुल्म हुआ है उसको मारा है, और उसको नारे लगाते हुए, चैंटिंग मतलब नारे लगाना, स्लोगन मतलब एक मखसूस जो है वो वर्ड्स होते हैं, अगेंस्ट ब्लेसफेमी, यानी कि जो ब्लेसफेमी जो हुई, उनके एलिगेशन जो लगाया गया है, या ब्लेसफेमी के किसी भी रिलीजियस रिस्पेक्टेबल पर्सन जो हमारे यहाँ जितने भी पैगंबर हैं उनके खिलाफ अगर कोई कहा जाता है तो उसको जो है वो ब्लेसफेमी का कहा जाता है। Many in the mob made no attempt to hide their identity, and some took selfies in front of the burning corpse. The police claimed that the grisly incident took place inside the factory premises and there was no way of knowing about it before that time. Many in the mob, no attempt to hide their identity, मतलब उनमें से जो हुजूम में थे उन्होंने किसी ने कोई हाइड नहीं किया अपने आप को ना, और इंतहाई सफाकी है कि सेल्फीज बनाते रहे उस लाश के सामने। पुलिस ने कहा कि ये प्रेमिसेस कहते हैं जगह को, ये फैक्ट्री के जो है प्रेमिसेस जगह पे हुई है। देयर वाज नो वे ऑफ नोइंग अबाउट इट बिफोर दैट टाइम। इसके साथ ही ये न्यूज आपको थोड़ी समझ आई होंगी, इसकी मीनिंग्स बताने की कोशिश करी हैं। बहुत से सिनोनिम्स यूज हुए हैं इसमें, ब्रूटल है,
پرپیٹریٹر ہے، یہ ورڈز ہیں، اس کو آپ ڈکشنری میں دیکھیے گا، اس کی میننگ آپ کو سمجھ میں آ جائیں گی، اور آپ کو کانسیپٹ کلیئر ہونا چاہیے، پھر سب چیزیں ایزی ہوتی ہیں، کیونکہ ایک ہی لفظ کو بار بار استعمال کیا جاتا ہے مختلف سینونیمز کو یوز کرتے ہوئے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ریڈنگ کا طریقہ اچھا لگا ہوگا، اور بہت بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ فار لسننگ، اللہ حافظ۔